Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Al Furqan Islamic Education Center. तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट जो स्टार्टिंग 4 लेटर्स हमारे पास है बेसिक लेटर्स, इसके बारे में हमने बात की। अभी हम जो आने वाले लेटर्स है इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे, और इस वीडियो में हमने जो कमिंग लेटर्स है उसको मतलब हमने ये कवर करना होता है कि हमने ये जो कमिंग लेटर्स है इसको हमने किस तरह मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने होते हैं। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में ये सब लेटर्स जो मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू 4 लेटर्स थे ये हमने कवर किए थे। तो अभी हम जिस तरह मतलब एक दिन हम स्टूडेंट से क्लास देते हैं तो दूसरे दिन हम उनसे रिपीटिशन करवाते हैं, ताकि जो कुछ हमने उनको पढ़ाए थे ये उनको क्लियर भी है या नहीं, तो हम उनसे मतलब रिपीटिशन करवाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट ताऊज, the first kalima and the second kalima, okay, about ta'uz and tasmiyah। तो हम उनसे पूछते हैं कि how to recite a'udhu billah and how to recite bismillah। हम उनसे पूछते हैं तो वो अगर मतलब बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं ना कि वो घर में प्रैक्टिस नहीं करते, और जो वीडियो हमने उनको सेंड की होती है ना वो वीडियो को या मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग को नहीं सुनते, तो ये मतलब उनको मसला होता है इसमें। तो हम फिर उनसे दोबारा प्रैक्टिस करवाते हैं, हम उन्हें मतलब डिस्करेज नहीं करते, फिर भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नो मैटर, वी कैन डू इट अगेन। हम उनसे कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम उनको दोबारा मतलब पढ़ाते हैं। तो हम फिर उनसे कहते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह फिर दूसरे ताउस की तरफ आते हैं, दूसरे कलमे की तरफ आते हैं कि विच इज ताउस दैट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह फिर हम ये जो पहले दिन हमने उनके साथ क्लास ली होती है ना उनके बारे में हम उनसे पूछते हैं, जो कुछ हमने उस क्लास में कवर की होती है ना हम उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज योर प्रीवियस लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस लेटर्स दैट वी डिड। तो हम उनसे पूछते हैं कि ओके व्हाट इज द फर्स्ट लेटर। तो कहते हैं कि अलिफ, यानी इसी तरह बा, ता, ता। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो लेटर्स की रिकग्निशन है, और लेटर्स की रिकग्निशन जो है ना वो दो तरह की होती है। पहला वाला जो है ना वो रिकग्निशन ऑफ लेटर्स ऑन द बेस ऑफ शेप्स, एंड सेकंड वाला रिकग्निशन ऑफ लेटर्स ऑन द बेस ऑफ डॉट्स। जिस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें बाज लेटर्स हमारे पास शेप्स में सेम है, जिस तरह अगर हम बा को देके, ता को देके, और इसी तरह हम सा लेटर को देके, अगर हम इनके शेप्स को देखें तो ये शेप्स के लिहाज से सेम है, क्योंकि ता, ता एंड बा, ऑल दीज 3 लेटर्स हैव सेम शेप्स। इस तरह हम देख सकते हैं कि ता, ता एंड बा, इनके जो शेप्स है वो एक जैसे है, शेप्स के हवाले से इनमें कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन इनमें जो फर्क है वो डॉट्स की बुनियाद पर है। शेप्स में जिस तरह हमने कहा कि रिकग्निशन ऑन द बेस ऑफ शेप, तो एक तो रिकग्निशन जो है वो ऑन द बेस ऑफ शेप्स है कि हम मतलब शेप्स को देखते ही देखते हम मतलब उनको मतलब गेट कर सकते हैं कि ये उस लेटर का शेप है, ये इस लेटर का शेप है। तो अगर हम देखें ना बा और अलिफ में जो डिफरेंस है वो डॉट्स की बुनियाद पर नहीं है, वो इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ डॉट, इट इज ऑन द बेस ऑफ शेप। क्योंकि जिस तरह हमने पहले वीडियो में बात की कि अलिफ इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, अलिफ इज जस्ट लाइक अ स्टैंडिंग लाइन। तो अलिफ और बा में जो फर्क है, अलिफ और बा में जो डिफरेंस है वो ऑन द बेस ऑफ शेप है, क्योंकि इनके जो शेप्स है वो डिफरेंट है। वन इज इन standing position and one is just like a boat shape which has one dot in the bottom. So as we can see that there is the difference of shapes। इसी तरह हम अगर बा और था में देखें तो इनके शेप्स, लेटर्स के शेप्स जो है वो एक जैसे है। दोनों के शेप्स जो है वो किश्ती जैसे है या मतलब बोट जैसे है।
to make it similar or like to make it easier for students, मतलब स्टूडेंट्स को आसान बनाने के लिए हम उनको मतलब ये इसी तरह पढ़ाते हैं कि इनके शेप्स में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इनके डॉट्स में फर्क है। अभी हम बा और ता को मतलब वेल रिकग्निशन करने के लिए या मतलब वेल रिकग्नाइज करने के लिए हमने उनके शेप्स, अगर शेप्स को देखें तो वो तो एक जैसे हैं, लेकिन फर्क जो है ना वो डॉट्स में है। रिकग्निशन ऑन द बेस ऑफ डॉट्स। अब हम ये दोनों लेटर्स जो है ना वो मतलब डॉट्स के बुनियाद पे हम इनको रिकग्नाइज करते हैं कि बा में हमारे पास एक डॉट है विच इज इन द बॉटम पोजीशन, ता में हमारे पास टू डॉट्स है विच आर ऑन द टॉप, और इसी तरह ता में जो है ना थ्री डॉट्स है विच आर ऑन द टॉप। अगर शेप्स देखे तो बा ता ता सेम शेप्स but difference of dots. One has one dot in the bottom, ta has two dots on the top, ta has three dots on the top. So इसी तरह हम अगर ये उनको पढ़ाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि look dear student, there is two types of recognition of letters, one on the base of shapes and one on the base of dots. As we can see that alif and ba has the shape difference, that alif is in a standing position, which is like from top to bottom, which is just like a standing line. And as we can see the second line, the second letter, which is ba, so ba has boat like shape and it has one dot in the bottom. So to recognize these two letters, we should easily recognize it on the base of shape, because both of these letters have different shapes. And same is the case with the second and third and fourth letter, that in the second, third and fourth letters we have one shapes in the letters, like ba, ta and tha. These three letters have one shape. There is no difference in their shapes, but there is a difference in their dots. So hum, we recognize it. We recognize these three letters on the base of dots, because their shapes are same, but there is difference of dots. That there is one dot in the bottom. In ba letter, there are two dots on the top. In tha letter, there are three dots on the top in tha letter. So no difference in their shapes, but there is difference on the base of their dots. Ba has one dot in the bottom, tha has two dots on the top, tha has three dots on the top. So this was like this was the discussed letters, that ये जो थे हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस्ड किए गए लेटर्स थे, लेकिन हमने उनको थोड़ा और ब्यूटीफाई किया ताकि वो अच्छी तरीके से इनको रिकग्नाइज कर सके और इनको मतलब कोई भी मसला ना हो। फिर हम उनसे इसी तरह पूछते हैं कि बा हैज हाउ मेनी डॉट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉट, ता हैज हाउ मेनी डॉट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉट, सा हैज हाउ मेनी डॉट्स एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉट। तो इसी तरह हम मतलब इनसे ये क्वेश्चन पूछते ताकि ये उनको वेल रिकग्नाइज्ड हो जाए और मतलब इन लेटर्स में उनके लिए कोई भी मसला ना हो। इसी तरह फिर हम मतलब आगे की लेटर्स की तरफ जाते हैं। हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट letter of the first line, which is in a very specific shape, which is just like in this shape. So anywhere in the Qaida, when you see this kind of specific shape, particular shape, which is just like in this very shape, in this very structure. So whenever we have this kind of shape of a letter which has one dot in the middle, so we have to call it जीम। जीम हम उनसे इसी तरह मतलब ये नीव लेटर डिस्कस करवाते हैं या उनको पढ़ाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, जब भी हमारे पास कायदे में इसी तरह शेप हो
जिसमें हमारे साथ एक डॉट हो, लेकिन डॉट की पोजीशन जो हो वो मतलब दरमियानी वाली हिस्से में हो। तो जब भी हमारे पास इसी तरह का लेटर्स हो, तो हमने उसको किस तरह मतलब प्रोनाउंस करना है या रिसाइट करना है, या मतलब हमने उसको किस तरह मतलब अदा करना है, तो हम सिंपली कहते हैं कि जीम, जीम। फिर हम उन्हें मौका देते हैं कि वो भी हमारे मतलब हमारे पीछे रिपीट करे ऑल्सो। इसी तरह हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, this is a letter which is in this very specific shape, and this letter has one dot in the middle. So when we have this kind of dot and this kind of shape and the position of the dot in the middle part, so we have to recite it जीम, जीम। इस तरह अ, हमने पहले बात की कि बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि सम स्टूडेंट्स, बाज़ बाज़ स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रेशर्स होते हैं, बिगिनर होते हैं। इनके मतलब मतलब एज फैक्टर को हमने देखना होता है कि अगर स्टूडेंट्स मेच्योर है तो हम उनके साथ फिर मतलब ये मद के फंक्शन के बारे में उनके साथ डिस्कस करवाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, and the symbol that you see, the sign that you see, this is called mud sign, and the function of the mud is to stretch a minimum 3 second and maximum 5 second. अगर हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो मतलब 6 years old या मतलब इसी तरह मतलब 6 सालों के होते हैं, तो हम फिर उनके साथ मतलब ये चीज़ें नहीं डिस्कस करते, क्योंकि ये हम मतलब बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीज़ों को बाद में फिर हम कवर करते हैं। इसी तरह फिर हम मतलब सेकेंड लाइन की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ओके नाउ डियर स्टूडेंट लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड लाइन। और हम उनसे कहते हैं कि ओके, इस तरह हम अगर देखें ना तो जीम और हा जो है ना, जिस तरह हमने पहले बात की कि रिकग्निशन ऑन द बेस ऑफ शेप एंड रिकग्निशन ऑन द बेस ऑफ डॉट्स, तो यहाँ पर जो रिकग्निशन है वो ऑन द बेस ऑफ डॉट है, क्योंकि हा और जीम के शेप्स में बिल्कुल जो है ना फर्क नहीं है, एक जैसे शेप्स है। तो हाँ में अगर हम देखें ना तो इसमें हमारे साथ कोई भी जीरो, वी कैन से दैट जीरो डॉट्स आर देयर दिस लेटर, या मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास ना नीचे की तरफ, ना मिड वाले हिस्से में, ना मतलब ऊपर वाले हिस्से में कोई भी डॉट नहीं है। तो जब हम उनको पढ़ाते तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके ओके डियर स्टूडेंट, now we can see in the second line the first letter which is just like in the shape of G, but this letter does not have any dot either in the middle part or on the top or in the bottom. So a letter which is just like G but with zero dot, with no dot, so we have to recite it ha, ha, ha. और फिर हम उन्हें मौका भी देते हैं कि you should recite it ha, because it is in black color and black letters are to be recited softly. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड or the next letter which is in green color, and the green color letters are all recited heavily. So as we can see that it is just like ha and jim, because these three letters have the same shapes. There is no difference in their shapes, but there is difference in their dots. As we can see in ha, we do not have any dot. We simply recited ha, we recited softly. So this one letter is to be recited heavily because it is in green color, and most importantly, it has one dot in the top position, or we can say on the top. So when we have this kind of letter which has one dot, which is in green color, and the dot is especially on the top position, so we have to recite this kind of letter kha, kha, kha. इन लेटर्स को डिस्कस करने के बाद हम फिर स्टूडेंट्स को पेंटिंग की तरफ ले चलते हैं, ताकि यही लेटर्स उनको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए।
क्योंकि हम इस तरह करते हैं कि उनके साथ रिपीटिशन भी करते हैं, उनके साथ रिहर्सल भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, उन्हें मौका भी देते हैं, उनके साथ मतलब थोड़ी बहुत असेसमेंट भी करती है। इस तरह ना हो कि मतलब जो लेटर्स हमने कवर की है उनका उनको उन लेटर्स के बारे में पता ना हो। हम तब तक आगे नहीं जाते जब तक उन्हें ये बेसिक लेसन और इसी तरह ये बेसिक लेटर्स क्लियर ना हो जाए। तो पर फिर हम इसी तरह मतलब पेंटिंग की तरफ जाते हैं और हम प्रैक्टिकली लेटर्स को ड्रा करते हैं। और हम फिर उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू लेट्स डू ड्रा लेटर्स प्रैक्टिकली सो दैट यू कैन वेल रिकग्नाइज ऑल दीज लेटर्स। तो हम फिर मतलब लेटर्स ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू ड्रा अ लेटर, यू विल हैव टू टेल मी विच लेटर इट इज। ओके, सो फिर हम लेटर्स ड्रा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, विच इज दिस लेटर। सो जिस तरह वो मतलब लेटर को देखते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दिस इज दैट लेटर। तो कहते हैं कि दिस इज लेटर है। हम रीजन का पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड हा लेटर। तो कहते हैं कि दिस लेटर हैज जीरो डॉट and this is in a very specific shape. So when we have this kind of shape with no dot, so we call it ha। फिर इसी तरह हम इनमें एक डॉट ऐड करते हैं मिड पार्ट में और हम उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव एडेड वन डॉट, नाउ टेल मी विच इज दिस लेटर। तो वो कहते हैं कि दिस इज लेटर जीम। हम रीजन का पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड जीम। तो वो कहते हैं कि इसमें एक डॉट है मिडल पार्ट में एंड इट हैज दिस वेरी स्पेसिफिक शेप। सो व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ शेप वी हैव टू रिसाइट इट जीम। इसी तरह हम इस डॉट को फिर रिमूव करते हो और इनको मतलब ऊपर वाले हिस्से की तरफ ले चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ओके नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, विच इज दिस लेटर। तो वो मतलब जिस तरह लेटर को देखते ही देखते उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये लेटर खा है। वो कहते हैं कि दिस इज लेटर खा। सो वी आस्क अबाउट द रीजन बिकॉज we have to make them satisfied and we have to make them clear with each and every single letter so that they can well recognize every letter। तो हम उनसे पूछते हैं कि ओके why this is called kha letter। तो वो कहते हैं कि it has one dot on the top and it has this very specific shape। so इसी तरह ये क्लेयर्स ये लेटर्स उनको मतलब क्लियर हो जाते हैं। और इसी तरह फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि ओके नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट लेटर्स, स्पेशली द थर्ड लेटर इन द सेकंड लाइन। और हम उनसे ये डिस्कस करवाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज अ नीव लेटर, दिस इज द नेक्स्ट लेटर which is on number third in the second line। Okay, so this letter has this very specific shape. It has been curved. Okay, so whenever we have this kind of shape, हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लीव लेटर है, नेक्स्ट लेटर है। जब भी हमारे पास इसी तरह का लेटर हो जो मतलब थोड़ा राइट की तरफ मुड़ा हुआ हो, तो हम इस तरह के लेटर को क्या कहेंगे? हम इस तरह के लेटर को दाल कहेंगे। एंड जब हम यही मतलब यही डिस्क्रिप्शन उनको करवाते हैं तो हमने इनको ये इंग्लिश में करवाना होता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, this letter is a bit curved to the right side. So when we have a curved letter like this, so we have to recite it dal dal। और फिर हम रिपीटिशन के लिए उन्हें भी मौका देते हैं ताकि वो हमारे पीछे रिपीट करे, क्योंकि रिपीटिशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम उन्हें चांस देते हैं तो उन्हें मौका मतलब उनको हम मौका देते हैं तो उसी से वो लोग मतलब फ़ायदा उठाते हैं। और इसी तरह मतलब उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यही से शुरू हो जाता है। और हम उन्हें कहते हैं कि दिस इज़ द कर्व्ड लेटर, when a letter has this very specific shape and it is in a curved shape, so we will have to call such type of letter, such shape of letter dal। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट,
Now let's move toward the Neem letter, which is just like Dal, which is also in a curved shape. So when we have this shape of letter which has one dot on the top, as we can see, there is no difference between Dal and Dal on the base of shape, but there is difference on the base of their dots. क्योंकि अगर हम देखें, as we can see that there is no dot, there is zero dot in the dal letter, but there is one dot on the top position of that. So that's why we recite this letter differently. We recite it zal, zal. The first one, dal. Second one, zal. अगर हम उनसे पूछते भी है कि ओके व्हाई इट इज कॉल्ड दाल, सो वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास डॉट नहीं है, जीरो डॉट है, ये सिर्फ मुड़ा हुआ लेटर है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का लेटर हो, इस शेप का लेटर हो, तो हम उन्हें मतलब दाल कहेंगे। और इसी तरह अगर सेकंड लेटर की बात हम करें तो हम उनसे पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड दाल लेटर, तो वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो जो शेप है वो दाल जैसा है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें हमारे पास डॉट है ऊपर वाले हिस्से में। तो इसी वजह से इस डॉट की वजह से हम इसको इस तरह रिसाइट करते हैं कि जाल, जाल। ओके, तो इसी तरह फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे वाले लेटर्स को मतलब कवर करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट लेटर। हम उन्हें कहते हैं कि ओके नाव आगे वाली लेटर्स की तरफ मतलब जाते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि ओके सो दिस इज अ नीव लेटर and this letter is in this very specific shape. So dear student, when you see such shape of letter, you have to call it raw. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिस तरह हमने ये पहले से ही उनके साथ डिस्कस करवानी होती है कि ब्लैक कलर लेटर्स और ग्रीन कलर लेटर्स, इनको थोड़ा बहुत इनके साथ रिपीट भी करना होता है कि अगेन देयर इज ग्रीन लेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रीन लेटर, हाउ टू रिसाइट द ग्रीन लेटर। तो मतलब उनकी रिपीटिशन भी होती है, और इनका जो कंसेप्ट होता है वो और भी मजबूत हो जाते। तो वो कहते हैं कि the green letters are supposed to be recited heavily। और फिर उन्होंने कहते हैं कि okay dear student, when we have such shape of letter, how to recite such type of letter, so we tell them that this is green letter and this has this very specific shape, so we have to recite it raw, raw, इस तरह to make them more clear, to make them more comfortable in understanding of the letters, in recognition of the letters. So we also tell them, हम उनको मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरफ ले चलते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, if it seems difficult for you, let me take you to the English alphabet। जिस तरह हमारे पास RAA, तो ये हमारे पास रा का प्रोनाउंसिएशन बनाता है, तो हम कहते हैं कि रा, रा। तो यही बातें जब हम उनके साथ डिस्कस करते हैं इंग्लिश में, तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, इफ इट्स difficult for you to recite, so is in English alphabet we have R, and when we add two A letters, so it sounds like the same letter, that raw, raw। और इसको हमने मतलब ये थोड़ी मतलब हैवीली भी रिसाइट करना होता है कि रॉ, रॉ। इसी तरह फिर हम थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लेटर जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है थर्ड लाइन में, तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ let's move toward the third line and the first letter, which is just like in the previous letter shape, which is just like in the raw shape, but there is the difference of dot, because the shapes are same, but there is only difference in their dot, that in the second one, I mean in this letter, which has one dot on the top. So when we have this kind of letter just like R, but there is the addition of dot on the top position, so we have to recite it
The, to make it more easier, we give them the example of English alphabet, that Z double A. So the, it sounds like this letter pronunciation, or this letter recitation. So Z double A, the so dear student, when we have this type of shape, just like as we have in raw, but there is the addition of one dot on the top, so we have to recite it the, the, और फिर हम इसी तरह अगेन स्टूडेंट्स को पेंटिंग की तरफ ले चलते हैं, ताकि इनको ये और भी मतलब स्ट्रांग हो जाए, और हम इनको मतलब लेटर्स ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू प्रैक्टिकली ड्रा सम लेटर्स सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इट मोर इजीली। तो फिर मतलब हम पहला लेटर ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, टेल मी विच लेटर इज दिस। तो कहते हैं कि मतलब रा, हम रीजन का पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड रा। तो कहते हैं कि it has this very specific shape with zero dot, so that is why we call it raw. फिर हम दूसरा लेटर ड्रा करते हैं कि ओके, टेल मी डियर स्टूडेंट विच इज दिस लेटर। तो कहते हैं और हम मतलब ऊपर वाले हिस्से में एक डॉट भी लगाते हैं कि विच इज दिस लेटर। तो कहते हैं कि ज, ज। हम अगेन रीजन का पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड za letter। तो कहते हैं कि it is just like ra, and this letter has a very specific shape, but there is the addition of one dot on the upper side, or we can say on the top position, so that is why we have to recite it za। फिर हम इसी तरह नेक्स्ट लेटर का शेप ड्रा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, it was great, but now let me ask you about the shape of this letter. Which shape of letter is this? So जिस तरह मतलब ये लेटर को स्टूडेंट्स लेटर को देखते हैं ना, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज द लेटर। तो हम रीज़न का पूछते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड द लेटर। तो कहते हैं कि ये कर्व शेप में है। जब भी हमारे पास कर्व शेप लेटर हो जिसमें जीरो डॉट हो, तो हम उन्हें दाल कहेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट लेटर ड्रा करते हैं और इनसे मतलब पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ टेल मी अबाउट द नीव लेटर, द नेक्स्ट लेटर, हाउ टू रिसाइट दिस लेटर। so they say that it is zal, zal। हम डिफरेंसेस के बारे में पूछते हैं कि ओके, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दाल एंड दाल। तो कहते हैं कि नो डिफरेंस इन देयर शेप, but there is difference in their dots. Dal has zero dot and dal has one dot on the top. So इसी तरह इन पेंटिंग में इनकी बहुत सी मतलब क्लेरिफिकेशन हो जाती है, और इनको बहुत सी मतलब आसानी हो जाती है लेटर्स की रिकग्निशन में। इसी तरह पर मतलब हम आगे की लेटर्स की तरफ जाते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, now let's move toward the next letter, which is in this very shape, in this very structure. So when we have this kind of shape, just like as we can see that the first part or the beginning part is just like we can say that it has the shape of uh, teeth, as we can see that one tooth, second and the third. So when we have such type of letter in which in the beginning part we have like kind of two kind of teeth, that first, second and third. So we have two, and then it is elongated in such a way and then gone upward and finished there. So when we have this kind of shape, we have to call it seen, तीन। हम उनसे मतलब कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो पहले वाला हिस्सा है लेटर का, वो
तीन दांतों जैसा है, जिस तरह मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. To make them more clear with the recognition of the letter, so we give them like common example that it has just like teeth shape, and then it is elongated in such a way that it is there. And so when we have this kind of shape, we have to recite it screen. Screen, just like in English alphabet, S double E and N. Screen. Screen. Okay, dear student, फिर हम उन्हें कहते हैं कि dear student, that was about the seen letter. Now let's move toward the second letter. तो फिर हम उन्हें आगे वाली लेटर की तरफ ले चलते हैं कि this letter has just like the previous letter shape. As we can see, it has also three teeth, one, two, and three. There is no difference. अगर हम देखें तो सीन और शीन में शेप्स के लिहाज से कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इनका जो मेन फ़र्क है वो डॉट्स के बुनियाद पे है, वो इट इज़ ऑन द बेस ऑफ शेप. तो हम इसी तरह उनको पढ़ाते हैं कि डियर स्टूडेंट, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस लेटर एंड दिस लेटर इन देयर शेप्स, बट देयर इज डिफरेंस इन देयर डॉट्स. इस तरह हम इस नीव लेटर में, as we can see in the नीव letter, that it is just like in the seen letter, but there is the addition of three dots on the top, one, two, and three. We tell them to count the letter, to count the dots, how many dots are there. So they counted that one, two, and three. We ask about the position of the dots, that oh, what is the position of these dots. So students say that the position of the dot is on the top. So then we tell them that look, shape has no difference, but there is only difference of dots. So because of these three dots on the top position, we also have to recite this letter differently. So we tell them to repeat after us that sheen, sheen, sheen. The first one, seen, seen. And इसी तरह फिर हम उनसे पूछते हैं कि any problem with these two letters, is it clear to you, any difference between their shapes. तो वो कहते हैं कि no difference in their shape, any difference in their dots. So मतलब reply देते हैं कि yes, there is a difference in their शेप्स. पहले वाले में हमारे पास डॉट्स नहीं है, दूसरे वाले में हमारे पास डॉट्स है और ऊपर की तरफ है. तो इसी वजह से हम इनको मतलब डिफरेंटली रिसाइट करते हैं. तो इसी तरह इन लेटर्स को डिस्क्राइब करने के बाद हम न्यू लेटर्स की तरफ जाते हैं और हम उनसे मतलब कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट लेटर है, इस लेटर का इस जैसा स्पेसिफिक शेप है. तो हम जब यही बात इंग्लिश में कहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द next letter which is in green color and which is in this very specific shape. So when we have this very specific shape in which the first part is rounded and then there is elongation in the second part of the same letter. So when we have this kind of specific shape of a letter, so we have to recite it صاد, صاد, صاد. फिर हम उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह हम देख सकते हैं कि SAAD, it sounds like the pronunciation of this letter. So we tell them that look dear student, in English alphabet, as we can see that SAAD sounds exactly just like this letter, that صاد, صاد. फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हमसे कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेटर. दिस लेटर हैज जस्ट लाइक द सेम शेप ऑफ द प्रीवियस लेटर, but there is the addition of one dot on the upper side or on the top position. There is the addition of dot on the top position, or there is one dot on the top. Because of that dot, we recite it differently from the previous letter. So we say that
This letter should be recited ضاد ضاد. और फिर हम इसी तरह उनको इंग्लिश अल्फाबेट की एग्जांपल देते हैं कि D AA D, but the first one should be the, like touch the tip of your tongue with the upper teeth, that ضاد ضاد. हमारे कहते हैं कि dear student, it is just like the shape of the first letter صاد, but there is the addition of one dot on the top. Because of that dot, we have to recite it differently. We have to recite it in such a way that ضاد ضاد. And we also ask them about the difference. हम उनसे फिर पूछते हैं कि any difference between these two in their shapes, तो वो कहते हैं कि no difference in their shape. Any difference in their dots, वो कहते हैं कि yes, there is dots. In the first letter we do not have any dot, in the second we have one dot on the top position. So ये इसी तरह मतलब उन्हें क्लियर हो जाता है, और फिर हम उन्हें मतलब नेक्स्ट लाइन की तरफ ले चलते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ लाइन, द फर्स्ट लेटर इन द फोर्थ लाइन. तो हम उन्हें कहते हैं कि फोर्थ लाइन में हमारे पास जो पहला वाला लेटर है, हम उनके बारे में फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि ओके, नाउ दिस इज अ न्यू लेटर. एज यू कैन सी दैट the first part of the first part of this letter is just like alif. We take them back. हम उन्हें मतलब फिर अलिफ की तरफ ले चलते कि look, अलिफ is in standing position, it is from top to bottom. So इसी तरह हमारे पास ये इस नीव लेटर में भी हमारे पास जो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वाला शुरू का जो हिस्सा है, वो भी अलिफ जैसा है. और बाद में इसको हमने मतलब इसको राउंड किया है थोड़ा, मतलब राइट की तरफ राउंड बनाया है, और इससे मतलब हमारे हमारे पास एक नीव लेटर फॉर्मेशन हुई है. तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके, the beginning part of this letter is just like alif, as you can see that it is in standing position, and then the lateral part of the letter is, or the second part of the letter is in a rounded shape, in a rounded shape. So when we have this kind of shape of a letter in which the first part is just like a lip and the second is little bit rounded, and then it's completed in the end. So if we have this kind of letter, so we have to recite it pa pa पॉप. और हम उन्हें मौका देते हैं ताकि वो हमारे पीछे रिपीट करे. तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, रिपीट आफ्टर मी हाउ टू डिसाइड दिस लेटर. सो दे रिपीट आफ्टर अस दैट पॉप पॉप पॉप. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट लेटर. द नेक्स्ट लेटर इज जस्ट लाइक the previous one, as it also starts in the in the beginning part, it is just like alif, and in the second part it is a rounded little bit, so it forms the same previous letter, but there is the addition of one dot on the top position. So a letter which has one dot on the top, which is in the beginning like alif, and in the second part rounded, so we have to call such shape of letter ज़ा ज़ा. और हम उनसे रिपीट करवाते हैं कि रिपीट आफ्टर मी डियर स्टूडेंट्स. सो वो कहते हैं कि ज़ा. और फिर हम इसी तरह उनसे डिफरेंस के बारे में पूछते हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेटर्स. सो वो हमारे साथ इसी तरह डिस्कस करते हैं कि पहले वाले में हमारे पास डॉट नहीं है, उसका जो मतलब शुरू वाला पार्ट है वो अलिफ जैसा है, और सेकंड वाला पार्ट जो है मतलब वो थोड़ा राउंडेड है. तो जब भी हमारे पास इसी तरह लेटर होता है विद जीरो डॉट, तो हम उन्हें
फॉर रिसाइट करेंगे। और फिर इसी तरह ज़ा के बारे में पूछते हैं कि ओके, सो देन व्हाट इज नीव इन दिस लेटर, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस लेटर। तो वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि ये लेटर भी फर्स्ट वाले लेटर की तरह है शेप में, लेकिन इसमें एडिशन जो है ना वो डॉट की है। और इस डॉट की वजह से हम इसको मतलब डिफरेंटली डिसाइड करते हैं। हम कहते हैं कि ज़ा, ज़ा। ओके, सो इसी तरह इन लेटर्स को डिस्कस करने के बाद अगेन पेंटिंग हमारे पास एक इजाफी सोर्स है, एक एडिशनल सोर्स है, ताकि हम उनको मतलब लेटर्स के हवाले से मतलब वी हैव टू मेक देम मोर क्लियर एंड टू मेक देम more comfortable with letters, to make letters easier and well recognized for them. So पेंटिंग के थ्रू हम इनको लेटर से आगाह करते हैं। तो इसी तरह हम मतलब इस न्यू लेटर्स को फिर ड्रा करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ओके, अब मैं आपसे मतलब लेटर्स के बारे में पूछूंगा, मुख्तलिफ लेटर्स में ड्रा करूंगा, और आपने मुझे लेटर्स के शेप के बारे में और इसी तरह मतलब उस लेटर के रिसिटेशन के बारे में आपने मतलब कहना होता है। तो हम इसी तरह फिर लेटर्स ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, टेल मी विच इज दिस लेटर। सो जिस तरह वो मतलब लेटर के शेप को देखते हैं, लेटर की पोजीशन, डॉट की पोजीशन को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस लेटर इज सीन। तो हम उनसे पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड सीन लेटर। तो कहते हैं कि इसमें हमारे पास डॉट नहीं है, एंड द बिगिनिंग पार्ट इज जस्ट लाइक थ्री टीथ। सो दिस इज व्हाई दिस लेटर इज कॉल्ड सीन। इसी तरह फिर हम इसमें डॉट्स ऐड करते हैं टॉप पे, और फिर उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज दिस लेटर एंड हाउ टू डिसाइड दिस लेटर। सो इसी तरह इसको देखने के बाद वो कहते हैं कि दिस इज लेटर शीन। हम रीजन का पूछते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड शीन लेटर। तो कहते हैं कि इसमें थ्री डॉट्स है ऊपर वाले हिस्से में, और इसमें जो बिगिनिंग पार्ट ऑफ द लेटर है वो हमारे पास टीथ जैसा है। तो इस वजह से जब भी हमारे पास कायदे में इसी तरह का लेटर हो जिसमें थ्री डॉट्स हो और इसका शेप इसी तरह हो, तो हम इसको मतलब शीन कहेंगे। तो शीन। इसी तरह फिर हम मतलब नेक्स्ट लेटर्स ड्रा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा next letter and you will have to tell me about that shape of letter, that recitation of letter। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि what is this letter। तो लेटर को देखने के बाद वो कहते हैं कि दिस इज लेटर सॉद। फिर हम डॉट को ऐड करते हैं अपर वाले हिस्से में, टॉप पोजीशन वाले हिस्से में, के नाव विच इज दिस लेटर। तो कहते हैं कि दॉद, क्योंकि ये तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस की होती है। ये सिर्फ इनको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस देने के लिए और मतलब इनको स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि ये लेटर्स इनके जहन में बैठ जाए और इनके मतलब इनको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हम इसी वजह से इनके साथ ये पेंटिंग में भी प्रैक्टिकली ड्रा करते हैं और इनसे पूछते हैं, ताकि इनको कोई भी मसला ना हो लेटर्स रिकग्निशन में, चाहे वो मतलब डॉट्स की बुनियाद पर हो या इसी तरह मतलब शेप्स की बुनियाद पर हो। और फिर हम मतलब नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं और इसी तरह मतलब पूछते रहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, now this is the nib letter, so you also have to tell me about the shape of this letter। now tell me which shape of letter is this, so and how to recite this letter। तो वो कहते हैं कि this is letter थ, थ। और फिर हम इसमें डॉट को
ऐड करते हैं ऊपर वाले हिस्से में और इनसे पूछते हैं कि ओके नाउ हाउ टू रिसाइट दिस लेटर बिकॉज देयर इज द एडिशन ऑफ डॉट on the top position, so how to recite it and what is the difference between this and that. तो वो कहते हैं कि इसमें लेटर है टॉप वाले हिस्से में और पहले वाले में डॉट नहीं था और इसमें डॉट है, तो इस वजह से हमने इनको मतलब डिफरेंटली रिसाइट करना होता है कि दिस इज लेटर वो वो so this is really helpful to discuss them with painting and to discuss to draw them practically and the letters and to ask them about the letters